class. First, understand a few things. How do we solve trigonometric equations? Whatever prior knowledge we gained in the last class regarding the base angle or the reference angle on all the possible solutions, this सबको we'll put into practice today. Okay, what if I tell you first? Let's start with the basic quadratic equation. How do you solve this one? Yes, class. If I tell you x square is 9, how do you solve this one? आप square root लेते हैं, but when you take a square root, the calculator does not give you both the square root. You put a plus and a minus sign on your own because you know कि the square of a negative number is also a positive number. तो आप फिर दोनों possibilities consider करते हैं. Is that right or wrong? Is that right? सही है. तो using our prior knowledge we come to this conclusion. इसी चीज को when I take it into a trigonometric equation, if I tell you that solve, and if I tell you that x is, sine x is 1 over 2, एक मिनट बेटे बता रहा हूँ, and x is in between 0 and 360. So I'm basically asking you sine x is half. What are the x solve का मतलब होता है we need to find the value of the unknown. X की वो values निकालो and I've told you x is between 0 and 360. हाँ पूछो. बिल्कुल स्क्वायर रूट से पहले प्लस माइनस लगता है क्योंकि हमें पता हो तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. यस क्लास, क्या करेंगे? साइन इनवर्स ले ले एंड 1 ओवर हाफ कर ले. ओके, द मोमेंट यू डू दैट यू हैव स्टेप बैक इनटू ओ लेवल मैथमेटिक्स. आप एक साल पीछे चले गए, व्हिच इज कॉल्ड ओ लेवल मैथ्स. सही है. अंडरस्टैंड इसको कैसे करना है. दो चार चीजें. वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशंस, वी नीड टू रिफ्लेक्ट आवर नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सही है. और हमें ऐसा मेथड बनाना है which is valid for all kinds of questions. How do we solve this? When we were figuring out the values, we were using an acute angle with the x-axis, which is called the reference angle or the base angle. सबसे पहले हम वो निकालेंगे. Let me call that alpha. हर तरह की वेरिएशन वैरायटी करा रहा हूं. If you keep on writing things simultaneously, you will understand what is basically happening. Sine alpha is half. What is alpha? Alpha is the base angle, the reference angle. I'll draw it. I'll show it to you people as well. So alpha की value is sine inverse of half. Alpha is the acute angle that we will make with the x-axis. So what is the value of alpha? अभी degrees में हम काम कर रहे हैं. So it is sine inverse of half, or which is 0.5, and that should be, मैं इसको degrees में कर लूँ, 30 degrees. Remember the equation that, इसको मैं डाल देता हूँ. The equation that we are intending to solve is this one. This is the equation that we are intending to solve. We have figured out alpha. Alpha अब कहाँ exist करेगा? That is what we have to come up with, and that is the reason we studied the 4 quadrants for this one. बहुत आराम सुकून easy तरीके से आप इसको solve कर लेंगे. This was A. This quadrant was called A because यहाँ पे all trigonometric ratios were positive. This is the quadrant called S. Why? Because only sine was positive over here. This is called T because यहाँ पर only tan was positive, and this is called the quadrant C क्योंकि यहाँ पे only cos is positive. So you have figured out your alpha. दोबारा बता रहा हूँ, I am intending to solve this equation. इस इक्वेशन में साइन इज पॉजिटिव. सो साइन कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में. आई विल ड्रॉ माय अल्फाज ओवर हियर. अल्फा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड अल्फा इन द सेकंड क्वाड्रेंट. नाउ व्हाट इज द डोमेन ऑफ द क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या एक्स की पॉसिबल वैल्यूज गिवन थी? 0 से लेके 360. I'll move in the direction from 0 till 360 and I'll see कि मैं कब alpha के बराबर आता हूँ. This is the first time when my angle will be equal to, or it will be touching the value of alpha, and this is the only other time. पूरे 360 रोटेशन में कहीं और मैं अल्फा को टच कर रहा हूँ. पॉजिटिव 360 का मतलब है you start from 0 and you go in this direction anti-clockwise
till 360, उसमें आप अल्फा के बराबर कब आए? 2 दफा, एक द अल्फा इटसेल्फ, so x की possible solutions are alpha itself and the other one is 180 minus alpha. Okay class, zara everyone please focus. If I tell you cos x is negative half, what is the first thing that you want to do? You want to figure out the quadrants भी बाद में करेंगे, you are right. The alpha, the acute angle. Acute angle पे sin, cos and tan कोई भी नेगेटिव होता है? नहीं होता. अल्फा फिगर आउट करते हुए आप नेगेटिव साइन नहीं लेंगे. You will not be considering the negative sign while taking alpha. Is this clear? फिर ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है हमें? This will be telling us the quadrants. आप अल्फा एक एक्यूट एंगल की बस वैल्यू निकाल रहे हैं. क्या ये अल्फा की वैल्यू जरा मुझे बताओ. 60 आ गया. Remember, we are doing all these steps to solve this equation. हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सारे स्टेप्स करें. We have figured out the acute angle. Now, where will that acute angle exist? जहां, very good, जहां cos negative होगा. Remember the equation that you are trying to solve, you see that cos is negative over there. So where will this alpha exist? सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एक्यूट एंगल एग्जिस्ट करेगा. ASTC लिख लो. This alpha will exist over here or over here. Please stay with me and keep on writing everything down. Do not wait for the entire solution and then copy it, वरना कुछ नहीं समझ आएगा. I figured out alpha and I figured out where my alpha will exist as per my equation. अल्फा फिगर आउट करते हुए नेगेटिव का साइन नहीं लिया. रीजन, अल्फा वाज जस्ट एन एक्यूट एंगल. द नेगेटिव साइन विल इंडिकेट द क्वाड्रेंट के अल्फा कहां एग्जिस्ट करेगा. अल्फा तो एक एक्यूट एंगल की वैल्यू है. व्हाई डू आई नीड अ नेगेटिव विद दैट? एक्यूट पे साइन कॉस टैन कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता. तो अल्फा फिगर आउट करते हुए नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना. आई डू नॉट नो हाउ योर कैलकुलेटर्स विल ऑपरेट. कुछ वैल्यू वही माइनस के साइन दे देते हैं, कभी ऑब्ट्यूज देते हैं, फिर परेशानी होगी. बोलो बताओ क्या आएगी. कॉस इनवर्स ऑफ हाफ करो, कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, निकालो बेटे. कॉस इनवर्स ऑफ हाफ करो. क्या आया कॉस इनवर्स ऑफ हाफ सबका? 60 आया. अल्फा ही आ रहा है. नाउ व्हाट इज द डोमेन इन द क्वेश्चन? एंगल की डोमेन क्या गिवन है क्वेश्चन में? -360 से +360. जरा इस बात को समझ लो. व्हाट डज +360 मीन एंड व्हाट डज -360 मीन? +360 का मतलब है आप यहां से चले हैं और एंटी क्लॉकवाइज आपने किया है. दिस इज 0 से लेके पॉजिटिव साइकिल ऑफ 360. इज दिस क्लियर? व्हाट अबाउट द नेगेटिव साइकिल ऑफ 360? दैट वुड मीन आप स्टार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हो रहे हैं, पूरा घुमाकर आप यहां तक आ रहे हैं. दिस इज 0 से लेके नेगेटिव 360. सो नेगेटिव एंगल मीन्स अ क्लॉकवाइज रोटेशन फ्रॉम द positive x-axis. That is what a negative angle indicates. चले यहां तक क्लियर है? This is the domain of the question. अभी मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखे हैं. I am just telling you what the domain of the question is और उसमें किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालेंगे. वो कर लेंगे, डोंट वरी. आंसर पे आ रहे. मैंने कहा अभी आंसर तो बताया नहीं ना मैंने. ये भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं. Now let's move through the positive cycle class. पॉजिटिव साइकिल में देखते हैं हम अल्फा के बराबर कब कब आ रहे हैं. व्हेन डू वी एनकाउंटर अल्फा? दिस इज माय फर्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. व्हाट इज माय एंगल? एंगल क्या है इस पे? 180 माइनस अल्फा. आई विल बी राइटिंग इट एज इट इज. आई एम नॉट यूजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा राइट नाउ, क्योंकि कोई भी अल्फा है आपने करना फिर ऐसी है. दिस इज माय वन सॉल्यूशन. और कोई सॉल्यूशन मेरी आएगी पॉजिटिव साइकिल में? कौन सी आएगी बताओ. यहां से चलते हैं. ये दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन आया विच इज 180
पूरा 360 घूम लो, एनी अदर सॉल्यूशन? कभी आप अल्फा से दोबारा टच कर रहे हैं, अल्फा को एनकाउंटर कर रहे हैं? नो। पॉजिटिव साइकिल में ये दो सॉल्यूशंस आ गए। इज दिस क्लियर? मैंने कहा साथ साथ लिखते रहो, जो बच्चा इंतजार कर रहा है कि पूरा हो जाए फिर मैं लिखना शुरू करूंगा, तो सिर्फ अल्लाह रहम कर सकता है, उसको समझ आ जाए, वो खुद नहीं समझना चाह रहा। नेगेटिव साइकिल में इफ आई मूव फ्रॉम दिस इज माय फर्स्ट आंसर। इस बात को जरा समझना, व्हाट इज दिस एंगल? ये मैंने पहला जो एंगल लिखा है, व्हाट इज दिस एंगल? हाउ डू आई राइट दिस एंगल? रॉन्ग? नहीं, अगर आप नेगेटिव में से कोई, वेरी गुड राबे, बहुत अच्छे बेटे। ये पहला तरीका इसको लिखने का कि अगर आप नेगेटिव में से कोई वैल्यू हटाना चाह रहे हैं तो यू एड इट। एक तो ये तरीका हो गया। इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूं, और यू कैन डू 180 माइनस अल्फा और उसको आप नेगेटिव कर लें। ये एक ही आंसर लिखने के दो अलग स्टाइल्स में बता रहा हूं। 180 में से अल्फा निकाल लें, जो वैल्यू आई है उसको नेगेटिव कर लें। यू आइदर राइट इट लाइक दिस और लाइक दिस। ये एक ही आंसर है, मैंने दो अलग स्टाइल्स में लिखा हुआ है। दोनों स्टाइल समझ लो, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बेस्ट तो यही है कि नेगेटिव में से इफ यू वांट टू रिमूव अ वैल्यू, यू एड इट बेसिकली। -180 में से अल्फा हटाना है तो प्लस करेंगे, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप कहें 180 माइनस अल्फा वैल्यू हो गई, और क्योंकि आई एम मूविंग क्लॉकवाइज तो इट विल बी विद अ नेगेटिव साइन। एनी अदर सॉल्यूशन इन द नेगेटिव साइकिल? यही आ रहा है सिर्फ नेगेटिव साइकिल में। एनी अदर सॉल्यूशन? पहले अल्फा के टर्म्स बताओ, व्हाट इज द सेकंड सॉल्यूशन? ये जो मैंने दूसरा लिखा है, वेरी गुड, -180 माइनस अल्फा लिख लें आप, या आप इसको यू कैन राइट इट बोथ वेज। 180 प्लस अल्फा एक वैल्यू निकाल लो और उसको यू पुट इट विद अ नेगेटिव साइन। Is this clear to everyone? Any other answer that I will encounter in my entire negative 360 का cycle? नहीं. You will, how many solutions have you ended up with? 4. Can you tell me all the solutions starting with the lowest value? -240, -120, 120, and is this clear to everyone? These are the 4 solutions that you end up with. So tan of alpha is half. What is the value of alpha? Tan inverse of half. कर लो, कैलकुलेटर आपको बताएगा। Tan inverse of half. Tan inverse of half. 26.6 degrees. क्लास सारी कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएंगी, 1 मिनट दे दो। Remember the equation that I am trying to solve, उसमें tan is positive. So if tan is positive, where will my alpha exist? First and third. I figured out my alpha. Now I am writing where my alpha will exist. अब जरा देख लो बेटे. Now I will move in the domain and see when do I encounter alpha. First the positive domain 0 till 360. एक तो alpha खुद हो गया. The second solution is 180 plus alpha. So the solutions are the alpha. Okay, what about the negative domain? The question is telling me I can go till -90. But when I go till -90, do I encounter alpha? अगर मैं यहां से जाऊं -90 तक, do I encounter alpha? So do I get any solution in the negative cycle? I don't. तो डोमेन होने का जरूरी मतलब नहीं कि उसमें सॉल्यूशन आपका आ भी जाए. So the two solutions that you end up with are 26.6 and
Is this clear, class? When it is an angle in degrees, round it off to 1 decimal place. Angle in degrees. Final answer. 2 पे रखो फिर at least. If I take a square root on both sides, I will say my cos x is plus minus 3 over 4. या cos x is root 3 by 2. जी बेटे, so what is the issue? किसी ने रोका है? Anything that is not clear till this point? I've just taken a square root. पूरे रूट 3 over 4 पे रूट है, 4 को रूट कर लिया अलग से, प्लस और माइनस दोनों के साथ वैल्यू आ गई. Okay, now Ghulam Rasool, these are the two equations that I am trying to solve. दोनों का पहले अल्फा निकालेंगे. Will they have the same alpha or different alpha? Yes, class. They will have the same alpha. They will have the same alpha. Why will they have the same alpha? सिर्फ माइनस साइन का फर्क है. It is the same thing, so they will have the same alpha. अल्फा तो सेम आएगा ना, अल्फा में नेगेटिव नहीं लेते. यही तो चीज समझा रहा हूं, समझ क्यों नहीं रहे हो? अल्फा इज द एक्यूट एंगल. करा ही नहीं मैंने. यही तो है ना, अल्फा इज द एक्यूट एंगल. क्यों आएंगे दो अलग अल्फा? इसका भी अल्फा अगर मैं निकाल रहा हूं, क्यों निकालूंगा? माइनस साइन नहीं लेते अल्फा के साथ. इसलिए समझा रहा हूं, गलत जा रहे हो, बता रहा हूं. अल्फा क्या आया? सही कर लो शाहजहान, इसको करेक्ट करो. 30 आया. होगा काउंट, क्यों नहीं होगा? Class, everyone please be attentive over here. If I wanted to find the alpha for this equation, I would have done cos alpha is root 3 by 2. If I would have wanted to find the alpha for this one, इसके लिए भी मैं cos alpha root 3 by 2 ही करता ना. नेगेटिव क्यों करता भाई? Negative only tells me the quadrant. Alpha is the acute angle. Acute angle पे sin, cos and tan नेगेटिव नहीं होता, तीनों पॉजिटिव हैं. So figuring out alpha